Students, before going to the explanation of this chapter text, chapter number 10, drug addiction, you must know what is the basic difference between addiction and abuse. Student, drug abuse is when you use legal or illegal substance in a way you shouldn't. Like जब आप किसी लीगल या इलीगल सब्सटेंस को इस तरीके से यूज करते हैं जिस तरीके से आपको नहीं यूज करना चाहिए, हम उसे अब्यूज कहते हैं. You might take more than the regular dose or you use someone else's prescription. You may abuse drugs to feel good, ease stress, or to avoid reality. But usually you are able to change your unhealthy habits or stop using altogether. On the other hand, addiction is when you can't stop. Not even when it puts your health in danger, not even when it causes financial, emotional, and other problems for you or your loved ones. That urge to get and use that drug can fill up every minute of the day, even if you want to quit. किसी एक ड्रग के आदी तब आप बनते हैं जब उसको रेगुलर आप यूज करते हो, और एक ऐसा वक्त आता है जब आप उस ड्रग को यूज करना क्विट नहीं कर सकते. उस वक्त ना तो आपकी हेल्थ आपको रोक सकती है, ना ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ना ही आपके अपने प्यारे आपको उस ड्रग को यूज करने से रोक सकते हैं. ये वो एक स्टेज होता है जब एक आदमी उस ड्रग का एडिक्ट हो जाता है. सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको इन दो कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस समझ आया होगा कि क्या ड्रग अब्यूज क्या होता है और ड्रग एडिक्शन क्या होता है. Now let's move towards the explanation of the text paragraph by paragraph.